स्वागत है फ्रेंड आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कैसे मैंने 2023 में अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। आई गेव अटेम्प्ट्स अर्लियर ऑल्सो, जैसे मैंने 2002 में 22 में भी दिया था। 2021 ऑल्सो आई गेव अटेम्प्ट बट आई कुड नॉट मेक इट। सो आई विल सी कि क्या चेंजेस मैंने इस बार लाए हैं सो दैट आई वॉज एबल टू मेक इट 2023। एंड ट्रस्ट मी इट विल रियली बी इंसाइटफुल, क्योंकि बिफोर दिस आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग कि कैसे होता है हाउ टू क्वालिफाई दिस प्रीलिम्स, बट आई फाउंड सम हैक्स। और इट्स नॉट हैक्स, इट्स लाइक एवरीबडी नोज इट but nobody does it. It's the same proverb. So मैंने इस बार क्या क्या चेंजेस किए that I was able to transition from this red zone to this green zone. So let's start. So first of all, I'll tell you what are the changes that you need to bring. First of all, my previous mistake that I did, it was most importantly overemphasizing current affairs. I was obsessed with current affairs. So I used to do newspapers. I used to do PT 365. Not regularly, but I was also doing the monthly magazines. So I did multiple sources for this current affairs, but it was all waste. Literally फालतू था, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने न्यूज़पेपर किया, PT 365 किया, कोई फ़ायदा नहीं होता है इतना डुप्लिसिटी करने का। सेकंड है डुप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक पॉलिटिकली मैंने पढ़े, विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल्स मैंने पढ़ा, लक्ष्मीकांत मैंने अदर नोट्स पढ़े, बट ट्रस्ट में इनका कुछ फ़ायदा होता नहीं है उतना। इट्स जस्ट एडिंग ऑन टू रिसोर्सेज। आपने इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ा होगा, marginal utility. Marginal utility is like if you are doing something, how much extra value it is going to add. So एक बार आपने कोई सोर्स पढ़ा and you have completed reading that resource, and if you add on to that resource, the value that it will be adding will be very less. आप शायद उतना ही पढ़ के दूसरे सब्जेक्ट को जो आपने नहीं कंप्लीट किया आपको ज़्यादा वैल्यू मिलता। सो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम। एंड थर्ड वाज द मेजर प्रॉब्लम दैट वाज ओवर थिंकिंग। आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि रिजल्ट क्या होगा। आई वाज जस्ट ओवर थिंकिंग प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, मेंस होगा या नहीं होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, एंड आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स ओनली इन दैट इनिशियल अटेम्प्ट्स। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, स्टॉप गोइंग फॉर ओवर थिंकिंग, जस्ट डू योर वर्क एज कृष्णा सेज इन महाभारत, निष्काम कर्मा. So we have to do nishkam karma. We don't have to think about the fruits. We just have to work hard, and that's it. So apart from this, if we go next, so next I would like to tell what changes I made in this attempt. First was not at all a single duplicity of resource. I was only concentrating on PT 365, and trust me, those who don't know, this is the resource of Vision IS, and trust me, it is going to suffice for the current affairs. आपको जानना पड़ेगा कि वहाँ जो भी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, अराउंड 95% ऑफ द पीपल आर रीडिंग दिस रिसोर्स ओनली. सो जो आपसे नहीं बनेगा वो किसी से नहीं बनेगा. एंड अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंड वॉट यू नीड इज़ बेटर देन अदर्स, नॉट द बेस्ट. सो यू जस्ट नीड टू बी बेटर देन अदर्स. एंड इफ़ एवरीबडी रीडिंग द सेम रिसोर्स, तो सबको सेम ही चीज़ें आएंगी. तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक, इट मीन्स नो बडी विल बी एबल टू मेक. सो ज़्यादा सोचना नहीं है, जस्ट यू हैव टू गो विद दिस. सेकेंडली, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यू, इफ़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी गुड टू रीड न्यूज़पेपर, बट इन माई केस आई स्टिल डिड नॉट रीड इट. आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन न्यूज़पेपर. इससे करना बहुत मेहनत लगेगा. एंड ट्रस्ट मी, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इसी न्यूज़पेपर से सारे कंटेंट यहाँ आते हैं. एंड अ पर्सन पेड बाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, फॉर एग्जाम्पल विजन इन केस ऑफ PT 365, they are paying lakhs and lakhs of rupees to that person to do this job. डोंट री इन्वेंट द व्हील. सो कोचिंग वाले इतना पैसा दे करके PT 365 बना रहे हैं, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए. देयर इज़ नो पॉइंट रिपीटिंग दी एफर्ट्स. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू वांट टू गो फॉर न्यूज़पेपर, इट्स वेरी गुड, बट देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड. आई विल से एब्सोल्युटली नो नीड फॉर दिस न्यूज़पेपर. थर्डली, व्हाट इट इज़, आई मेड द नोट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. अर्लियर मैंने क्या करता था कि आई यूज टू रिलाई ऑन दी नोट्स. मेरे नोट्स सेग्रीगेटेड थे, काफ़ी सेग्रीगेटेड थे. सो आई यूज टू रीड. I had one resource lying here, one here, one here, and during the exam I used to read all three and I used to compile, and this used to take a lot of time. तो ये टाइम बचाने के लिए इस बार मैंने क्या किया, I just compile, I ensured one subject, one notes, that's it, not more than that. One subject, one notes, that's it, no duplicity of resource. Apart from that, what I did, I give lot of mock tests, not lot of mock tests, I would say I give around 15 mock tests, and I think इससे काम बन जाता है, because no mock test is ever going to meet the level of UPSC. So there is no point giving n number of mock tests. See, mock test उनके लिए यूजफुल होते हैं, those who are going for CAT exam, क्योंकि वहाँ पर silly mistakes होने के chances होते हैं. Especially you have to practice the formulas of maths, etc. So for CSAT you should go for multiple mock tests. Like for CSAT you can go for around 30 to 40 mock tests. But for GS
इट्स ऑल अबाउट नॉलेज. हाँ, थोड़ा माइनर मिस्टेक का इफेक्ट पड़ता है, बट इट्स नॉट दैट मच. So you can go for less number of mock tests also. So I did not go for more than 10 to 15 mock tests. That was enough for me. The last one and the most important one is the positive attitude. Remember in the last slide I told overthinking is the biggest hurdle in the preparation of UPSC. So you have to go beyond it. You have to think positive and positive and positive. The positive thinking will only take you forward in this exam. So you have to think positive. Now if we go next, then what mistake I still did in prelims 2023 is this. First, I was little worried just before the exam. So our exam was scheduled on 28th of May, if I am not wrong, and just after I think 20 or 22, I started worrying about exam की क्या होगा, कैसे होगा, इतना कुछ कर पाऊंगा या नहीं. Secondly, there were some few easy questions which I missed, which I should not have missed, but I messed up in this. Why? Because the same thing, anxiety of the exam. And trust me, ये anxiety बहुत ही बुरी चीज़ है. So this was the thing which I messed up. Third one was the fearful at the beginning. तो मुझे स्टार्टिंग में ही स्पोर्ट्स से क्वेश्चन मिल गए थे एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड. देख, एक बार हुआ था 2021 में, बट आई थॉट कि यूपीएससी ने बंद कर दिया, बट दे अगेन अपीयर्ड विद स्पोर्ट्स क्वेश्चंस. तो थोड़ा सा झटका लगा, बट इट वॉज ओके. अगेन आफ्टर दैट, दिस ओवर थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द ओवर थिंकिंग विच आई टोल्ड अर्लियर. पहले ओवर थिंकिंग थी कि एग्जाम होगा या नहीं, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, बट दिस ओवर थिंकिंग इज़ लाइक सपोज देयर इज़ अ क्वेश्चन कि पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई प्रोविज़न है एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टली गिवन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन. तो मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सोच रहा था, लाइक गिविंग समवेयर एल्स एंड रेफरिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन समथिंग लाइक दैट. तो मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरप्रिटेशन कर रहा था. दैट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. सो यू नीड टू बिलीव कि यूपीएससी एग्जाम में ऑल यू नीड इज़ अ सिंपल थिंग, नॉट अ मेस ऑफ ऑल दिस थिंग, एंड यू डोंट नीड टू ओवर थिंक. अगर कहीं से थोड़ा सा हिंट मिल रहा है देन द स्टेटमेंट माइट बी करेक्ट. सो आई वाज ओवरटेकिंग इट, वेदर स्टेटमेंट बहुत अंदर तक बहुत डीपली पूछ रहा है या क्या. सो दिस वाज वन ऑफ द इशू विच आई थिंक आई विल हैव टू रिजॉल्व इन माई अटेम्प्ट इन 2024. अपार्ट फ्रॉम दिस, द लास्ट वन इज द रिस्क टेकिंग. आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे पेयर्स वाले क्वेश्चन थे, एंड ट्रस्ट मी पेयर्स वाले क्वेश्चन काफ़ी हेडेक देते हैं. दिस पेयर्स वाले क्वेश्चन थे, पेयर्स वाले. सो व्हाट आई डिड, आई टुक रिस्क इन सम ऑफ द क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड एलिमिनेटिंग द क्वेश्चंस. नाउ अभी बहुत लोग बोलेंगे कि एलिमिनेट हो गया है, बट ट्रस्ट मी, एलिमिनेशन हैज़ नॉट बीन एलिमिनेटेड एंड इट विल नेवर बी एलिमिनेटेड अनलेस यूपीएससी स्टार्ट्स आउटसोर्सिंग द क्वेश्चन. सो जब तक यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है, यू डोंट हैव टू फियर, एलिमिनेशन विल ऑलवेज बी देयर. सो अब देखते हैं कैसे मैंने ये किया. नाउ व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू सी द रियल क्वेश्चन पेपर. आई विल डू अ रियल टाइम सॉल्विंग ऑन द क्वेश्चन पेपर कि मैंने कैसे एग्जाम में किया था. आई विल डू द exact same thing what I did in the exam. So I'll do that in front of you. I will show you how elimination has not been eliminated all. पूरे मार्केट में फैला हुआ है, elimination has been eliminated, but trust me, elimination has not been eliminated at all. It's just that you need to develop the MCQ skills, or what we say problem solving skills. If you cannot imbibe this MCQ solving skill, then it will be tough. So what is this MCQ skill you need to see? I will show you, and trust me, डरना कुछ नहीं है. Elimination eliminate नहीं हुआ है, and I will prove it to you. Take mark my words for sure. I will prove it to you that elimination has not been eliminated at all. So इसके बाद में हम देखेंगे क्या कि authentic sources कहाँ से मैंने पढ़ाई की. Because I told you one subject, one resource. This 1S 1R will going take you a long way in this journey. So I'll tell you what I read, and trust me, it was very helpful. थोड़ा सा पढ़ के काम हो जाता है. And the last one was the daily target which I took. Of course पूरा नहीं हो पाता है. I was almost about to complete it to 70% or even lesser. Either 60% you can take it, but this 60% helped me. तो मैं बोलूँगा daily targets is a good thing. So again I have started this daily targets thing in my channel also, where I'll be posting my daily targets. आप भी अपना daily target डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं तो डालूंगा ही. So this will be a really good exercise as a group, and I think बहुत लंबा वीडियो gets going more than 10 minutes, तो maybe we can do this in the next video. Yeah, that will be good. एक अलग से पूरा वीडियो केवल क्वेश्चन पेपर के ऊपर, so that वो इतने कंटेंट के साथ मिक्स ना हो. A simple video, single video totally about the question paper. So I think that will be good. I will show you how elimination has not been eliminated by applying it in the 2023 question paper, and trust me, it will be very helpful. So I'll take this session tomorrow in the part 2 of this video.
सो फॉर दैट यू कैन स्टे टू ट्यून। नेक्स्ट वीडियो में ही मैं लाऊंगा ये कैसे मैंने सॉल्व किया था एकदम रियल टाइम, एंड हाउ आई सॉल्व्ड इट इन एग्जाम एग्जैक्टली लाइक दैट। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अराउंड 30 क्वेश्चंस वर देयर दैट वर सॉल्व्ड यूजिंग एलिमिनेशन ओनली। आपको ही पता है किसी को भी nobody knows more than 35 questions. After that it's just the MCQ skills that we develop. So this MCQ skills, और हाँ, केवल मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा, I will also teach you how to do elimination. और ये जो कोचिंग वाले बोल रहे हैं मार्केट में कि एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा, सो इट्स जस्ट नथिंग मोर देन अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, दे नीड टू गेट द स्टूडेंट्स। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक भी रुपये खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू स्पेंड ₹0, और आई कैन मेक लाइक दिस ₹0 फॉर दिस prelims preparation. Trust me, you stay connected with me and I assure you that you will qualify prelims 2024, that too at absolutely zero cost. That is my guarantee to you. So just stay tuned. I'll tell you how I solved this question paper in the exam time. So stay tuned for tomorrow. Tomorrow I'm going to make this video on this. So you can just now, आप लिख सकते हैं कमेंट में कि आपको और क्या चाहिए। लाइक टुमारो अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन पेपर 2023 क्वेश्चन पेपर, डू यू वांट एनीथिंग एल्स टू कंटिन्यू इन दैट वीडियो, और अब क्या है आपको मुझे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू।